Hello, professional colleagues. We have been receiving requests from various corners that Gujarat RERA, a practical course, need to be conducted for the purpose of registration. We are happy to announce the first ever course on Gujarat RERA registration of a project. We have divided into 10 sections. In each section, you will get various faculties to guide you. Let us look at the today's session where the faculty will explain you the process, procedure, rules, regulations, and at the end of the session, you will be having an opportunity to ask the questions. I request you to be very attentive and thank you very much for enrolling. Over to the faculty and the program in charge. Thank you very much. So, hello everyone, and a very good evening to each one of you all. To all the participants who have joined today, first of its kind basic registration course in Gujarat RERA as such. So, many of you all might be aware that we have done a very similar course and we are on still ongoing. The course is ongoing in Maharashtra RERA, in MahaRERA, the basic registration course, in which we have completed around 17 to 18 topics. The similar kind of structure is what we are planning to do in Gujarat RERA also, because there were a lot of participants who are practicing in Gujarat and wanted some insights regarding Gujarat RERA and how to do registration in Gujarat. Of course, we'll be covering a lot of topics in that, and this course we have divided into 10 different segments, 10 different important parts which is very relevant to the Gujarat RERA registration. Of course, before we dwell into how to register and what all we need to register, what all things we need to keep in mind while registering our documents, while registering a project, one most important thing is we should understand the sections and the relevant sections and act which is applicable to registration of Gujarat RERA. So with this, we have with us two very esteemed faculties in RERA who have been delivering lectures in RERA in Maharashtra specifically. But of course, today they will be giving us a guidance and experience and sharing what all are the registration process in terms of Gujarat RERA. So I welcome first and foremost CA Lalit Pawar sir, all the way from Nasik, who has been pioneer and always helping us in educating and empowering other professionals in RERA as such. We have with us Kunal Modi sir, also from Vasai, who has been into RERA practice and is an esteemed faculty right now into RERA, has been delivering lectures in Vasai branch as well as online also. So these two panelists are present with us. Alongside with that, Prabhu sir might also be joining in a few minutes time. But because of the time constraint and because this is just a 1 hour lecture, we'll dwell directly into the topic, which is registration of RERA. If I'll just dwell into the topic a little bit and give a detail about the topic, and then I'll hand over the mic to our esteemed panelist. We'll be dealing with the overview of the RERA Act, the sections 3, 4, 5 and relevant definition, Gujarat RERA rules, regulation, circulars and key definition and terminology. Of course, this is just a first introductory session which is there. So we will be dwelling into the basics of RERA registration, the section which are relevant, and we'll be discussing on that. So with this, Lalit sir, I hand over the mic to you. And throughout this session, if you all have any kind of queries or questions, please feel free to ask in the chat box. The more questions asked, the panelists also will be, eager and will share their experience and knowledge, whatever is relevant to the question. So with this, I hand over the mic to Lalit Pawar sir. And sir, you can take over from here. Thank you, CA Shreyash Prabhu sir. And first of all, I really very thankful to CA Ramesh Prabhu sir as well as Shreyash Prabhu for giving me such a wonderful activity. And I always ready to give or share a knowledge on real estate sector. I also thankful to MahaSeWA, then AHWOI and GRSC, who are jointly organize this session. Friends, our topic is registration of real estate project in the state of Gujarat, where we are covering section 3, 4, 5 and relevant definition, then Gujarat RERA rules, regulation and circular, and key definition and key terminology. So directly we will go to act instead of sharing any PPT and all these things. I will go to direct act and we will discuss on 3, 4, 5 section number of Real Estate Regulation Act 2016. This is Lalit sir, before we begin, I have a question to Kunal sir.
normally when people are practicing RERA and starting into RERA, what do you suggest? Should we start with seminar? Should we start with reading the act? What is your approach regarding this? Because since you are starting with the registration process, we are starting with scratch. If someone is just starting with RERA practice, and when you had also started, did you jump directly into the act? Did you join seminar sessions? What was your approach when starting the session? Thank you, Shreyas. The main basic criteria for going into this practice is first to understand the whole act, and then we will have to attend such sessions, for small sessions and the bigger sessions wherever they are conducted in institute or elsewhere, and then make our own clarifications, notes, and to study about other states also. What all things are happening in other states in RERA. So as and when you get more knowledge about RERA, you can start delivering sessions in your study circles and other areas for uh, making public aware about the RERA topic, because RERA is not only for the consumers, it is all altogether for good things for builders also, builders and developers. So basically, we will have to start learning. We will have to go through the act. We will have to attend such type of sessions so that we keep on getting more information about the RERA, and then we start giving those information to our clients so that they approach us for RERA registration work or any other ancillary related to RERA. Of course. Like I think so Kunal sir has said, ki the starting with the act and everything is very important, and then dwelling into the sessions, seminars at your local level, even if it's online. And then, I think so one of the most important element I think he missed out is interacting with a lot of other RERA experts and RERA people who are practicing into RERA. Because again, this is a new act which is there. The more and more interaction which we do with among our colleagues, our only experience and our only knowledge will increase. Lalit sir, if do you want to add before we dwell into the session, when you also started into RERA, like because there are many participants will be starting into RERA, how do you approach? How did you approach RERA, and what is your views on that? Ki whether should we do the act first, attend seminars, should we read judgment first, should we work with some other professional first who is into RERA, and then start our own practice? How do you analyze it? Actually, before RERA or before GST, there was a VAT and service tax. In that regime, also I have handled some builder clients, specifically from Pune region, where I have done my articleship. From that point, I have interested in real estate, and in between 2015 or 16, I have come to know that some real estate act is going to come. Then I have followed the trail, and now find 2016 real estate act is come. Then I have started searching for the real estate act, then uh, refer for the act, and then institute is also coming for the learning sessions, and this is a new act. And fortunately, I have got connected with Prabhu sir, who is a mastermind of this act, as per my knowledge, and I say that. And after joining with the Prabhu sir, I come to know for some seminars and then group discussion. Then all India level institute form a study group in 2017-18. There was I am a member of that study group for all over India. Then from 2019 to till date, WRC is forming RERA study group every year. And now last 4 to 5 years, I am a core committee member of that group. And all over India, some sessions are were held by the institute and other bodies, and their lecturer and I am attending also. Last year, Prabhu sir had taken a 4-day leadership development program for Real Estate Regulation Act and other related act. That was a very wonderful experience. Then I have attended the first exam of Real Estate Act of Institute of Chartered Account of India in New Delhi, and I have cleared that exam. This is how I started in real estate sector. Now I completely work in real estate, whether it is income tax, GST, or financing or accounting. All you tell me about real estate, I can guide you on that.
including PFESIC also. बिल्कुल मतलब आई थिंक सो आपने जैसे बोला है कि एक वंस यू ड्वेल इनटू द होल सब्जेक्ट आप एक स्पेशलाइजेशन चालू कर लेते हो तो आप इनकम टैक्स जीएसटी भी ऑन दैट सब्जेक्ट यू कैन डू इट Yes, इनकम yes, टैक्स yes. जीएसटी ऑन रियल GST, एस्टेट income tax, RERA, all are related. एग्जैक्टली इट इज नॉट नेसेसरी कि इनकम टैक्स मतलब सिर्फ आप एक इंडिविजुअल का कर रहे हो या बिजनेस का कर रहे हो आप एक एक ट्रांजैक्शन के ऊपर भी इनकम टैक्स जो आता है उस पर भी आप एक Yes, yes. प्रोफेशनल कंसल्टेंसी कर सकते हो ऑफ कोर्स स्कोप बहुत है रियल एस्टेट में एंड बिकॉज नाउ वी आर डूइंग गुजरात रेरा वन मेजर थिंग इज कि रियल एस्टेट इन गुजरात इज ऑफ कोर्स इंक्रीजिंग लाइक एनीथिंग विद गिफ्ट सिटी इंट्रोडक्शन ऑफ गिफ्ट सिटी ऑल्सो द अमाउंट ऑफ इंसेंटिव्स people are still not there is a lot of confusion in terms of what the income tax, GST, and all the other provisions are there in terms of gift city also. That also can be taken up if required. So of course, it's a never-ending process. Now that we have understood कि of course हम लोग को act पहले समझना बहुत important है. If we do not understand the act, then we cannot even educate and train the other people, and help our client also. So with this, Lalit sir, yes, you can start with the session and take us through all the important definitions, few important definition, and the important section number 3, 4, 5, which is regarding the registration. When is registration needed? And you might be aware, you are the expert. You can definitely take over on this. Before starting, I will tell you one incident where I have invited by the income tax department, where commissioner, assistant commissioner, and their team is invited me for the RERA and income tax and accounting and GST inter connections. And I have given lecture. I have given them a practical aspect, and they are eager to take practical approach. They went to MahaSeWA website, then downloaded some their builder cases, and they discuss with me and GST or RERA or part income tax. Concentrate on whole real estate. With this, I will start with my section 3. Like I think so, sir mentioned, Lalit sir mentioned, he started giving seminars and lectures, and based on that, he got the opportunity to give a presentation in front of the officers also, and that in turn helped him in his client base also, increasing his client base also, and dealing with such high esteemed professionals. So of course, understanding the act is one aspect, practicing it is another aspect. One more thing which we promote so often is giving out lectures, giving out seminars, making people aware of what knowledge you have, because only then will you be able to capitalize on what knowledge you have. Yes, Lalit sir, up to you now. This is a gazetted act. It's on Saturday, March 2000, Saturday, March 26, 2016. And its name is the Real Estate Regulation Act 2016, 16 of 2016. कभी भी आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो एक्ट रेफर कीजिए, उसके बाद में ही प्रैक्टिस मैनुअल या फिर मैनुअल रेफर कीजिए. मैं तो यही कहता हूँ, मैं तो कोई भी सेक्शन या कोई भी क्यूरीज अगर है तो वो सीधा एक्ट और रूल से शुरू करता हूँ. इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एनीथिंग which is given in act. So we'll directly jump to section 3, which is for promoter. Here we can see the heading: prior registration of real estate project with real estate regulatory authority. So section 3 subsection 1 says no promoter shall advertise, market, book, sale or offer for sale or invite person to purchase in any manner any plot. I am just reading and then I will discuss. So first of all, it's not like GST or income tax. GST में कैसे कि जैसे ही आपका टर्नओवर 20 लाख 40 लाख से ऊपर का जाने वाला है या क्रॉस करने के बाद 30 डेज में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ऐसे रेरा में नहीं है. क्यों? तो रेरा में पहले ही बताया गया है कि बिफोर एडवर्टाइजमेंट, बिफोर मार्केटिंग, बिफोर टेकिंग एनी बुकिंग, बिफोर एनी सेलिंग और ऑफर फॉर सेल और इनवाइट पर्सन टू परचेज इन एनी मैनर, तो आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हो, प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हो. बट बिफोर एडवर्टाइजिंग, बिफोर मार्केटिंग, बिफोर बुकिंग, बिफोर एनी सेलिंग, बिफोर ऑफरिंग फॉर द सेल, you cannot go for the you cannot go without registration. So before doing this activity, project promoter, builder should take a registration.
and then he can or she can advertise, market, book, sale or offer for sale. अभी इसके पहले अगर उन्होंने कर दिया है, उन्होंने मार्केट कर दिया है या फिर एडवर्टाइजमेंट कर दी है या बुकिंग ली है या फिर सेल किया है, they will face a penalty up to 10% of the project cost. I'm repeating, penalty which is up to 10% of the project cost, and it's maybe 0.5% or maybe a 10%, up to 10%. It is on depend on the authority's analysis regarding harshness of the activity done by the builder. Then this is the first part. Second part, any plot, apartment or building. Then any plot, apartment or building, it is coming into a real estate project. Or what is a real estate? So we will see in section 2, and then in any real estate project or part of it in any planning area without registering the real estate project with the real estate authority established under this act. So as we know, act is a central place. It is a union government act, and powers to establish or execute is given to the state authority. Just like Gujarat state have a real estate regulation authority, Gujarat. So in this section, they said you have to register with the authority. Then you can market, you can book the unit, you can sell or offer for sale. Then we will go to real estate project definition. This is real estate project definition. What is covered and what is not covered, we will discuss here. Real estate projects mean the development of building or building consisting of apartment, converting an existing building or a part thereof into apartment, or the development of land into plot or apartment as the case may be, for the purpose of selling all or some of the said apartment or plots or building as the case may be, include the common area, the development work, all important and structure thereon, all the easement right and opportunity belonging thereto. तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि कोई भी एक बिल्डिंग, मल्टीपल अपार्टमेंट, सिंगल अपार्टमेंट, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, देन पार्ट ऑफ अपार्टमेंट, डेवलपमेंट ऑफ लैंड, प्लॉटेड प्रोजेक्ट जो है वो भी इसमें कवर होते हैं, सम प्लॉटेड, सम कंस्ट्रक्टेड अपार्टमेंट वो भी कवर होते हैं. देन ऐसे भी होता है कि बिल्डर या प्रोमोटर बहुत सारे यूनिट्स बनाता है, उसमें से कुछ यूनिट सेल करता है और कुछ खुद रख लेता है. तो उस केस में भी रियल एस्टेट का जो रेरा रजिस्ट्रेशन है वो भी कंपलसरी है. वो सब्जेक्ट टू क्या है वो आगे भी देखेंगे हम लोग. देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज इट रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल. तो जो कुछ भी है, रियल एस्टेट हो, कमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल हो, सब कुछ रेरा में कवर होता है. देन दूसरी डेफिनेशन अगर देखी जाए तो ये है कि प्लानिंग एरिया. अभी प्लानिंग एरिया की भी डेफिनेशन है. वी विल सी द प्लानिंग एरिया डेफिनेशन. व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज एज पर एक्ट, if that project is in planning area, then it compulsory to get registered from the registration authority. If it is not, if it is out of planning area, then registration is not required. And as per my knowledge, Gujarat RERA authority has issued some circular regarding planning area. So you have to see that planning area definition or that circular. Planning area means a planning area or development area or a local planning area or regional development plan area by whatever name called, or any other area specified as such by the appropriate government or any competent authority, and include any area designated by the appropriate government or the competent authority to be planning area for further planned development under the law relating to town and country planning for the time being imposed as revised from time to time. So प्लानिंग एरिया जो होता है, जैसे कि म्यूनिसिपालिटी होती है, कॉर्पोरेशन होता है, पंचायत होता है, इसके अलावा भी कोई एरिया है तो इट इज अ प्लानिंग एरिया इफ दैट इज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट. इन गवर्नमेंट वी से गवर्नमेंट मीन्स या कंप्यूटेंट अथॉरिटी मीन्स स्टेट गवर्नमेंट or town planning authority. Then we will see promoter.
who is a promoter? We are saying go for registration, but who is going to uh, get registered the project? Then promoter has to take a registration. Then there is a definition of promoter. We will see that promoter means a person who construct or cause to be a construct an independent building or a building consisting of apartment or converting an existing building or a part thereof into apartment for the purpose of selling all or some of the apartment or some of the apartment to the other person and includes his assignees or तो फर्स्ट पार्ट में उन्होंने क्या क्या है कि हु कंस्ट्रक्ट और कॉज टू बी ए कंस्ट्रक्ट मीन्स व्हाट मैं अगर खुद की बिल्डिंग खुद बना रहा हूं देन आई विल बी ए प्रमोटर आई एम गिविंग someone contract for the construction then I am causing that to construct so I am also a promoter but we have to see the development agreement joint development agreement redevelopment agreement who is the main promoter in that case then construction contractor is a promoter then I will be a co-promoter then that promoter will go for the registration and in the co-promoter tab he will put my name as a co-promoter because I am a cause to be constructed then it covered independent building multiple apartment single apartment converting an existing building means redevelopment पार्ट डेवलपमेंट टू अपार्टमेंट जैसे कि कोई एक अपार्टमेंट आधा अपार्टमेंट हो गया है उसके ऊपर अगर कोई 2-4 फ्लोर बांधने हैं जैसे कि डीसीपीआर अगर कुछ चेंज होता है उसके वजह से पर्पज शुड बी ए सेलिंग वो ऑल होगा या उसमें से कुछ होंगे अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है उस प्रोजेक्ट में एज अ बायर अलॉटी देन यू हैव टू be registered and you are treated as a promoter. Then we will go for the second part. It's covering person who develops land into a project whether or not the person also construct structure on any of the plot for the purpose of selling to other person all or some of the plot in the said project whether these are without structure thereof or so this is for the land project if you purchase the agricultural land you are converting into a non-agricultural land then you will put the layout on the over there then you will develop plot pieces of land and then you will sell out of that you will sell something and you will keep in that case also you have to register and you will be created as a promoter third part any development authority or any other public body in respect of allotee of अभी बहुत सारी गवर्नमेंट अथॉरिटी है सिडको है माडा है या फिर और कोई एमआईडीसी है या जेआईडीसी है तो ये लोग अगर इंडस्ट्रियल प्लॉट अगर बना रहे हैं या फिर रेसिडेंशियल डेवलप कर रहे हैं they have to register with the authority because they are specifically treated as a promoter. Then building or apartment as the case may be constructed by such authority or body on land owned by them or placed at their disposal of by the government. ये authority खुद वो land होल्ड कर सकती है उनके नाम पे हो सकता है या फिर गवर्नमेंट लैंड पे एज अ अथॉरिटी करके ये डेवलप कर रहे हैं फिर भी they have to go for the registration because they are specifically mentioned as a promoter in the definition of promoter. Then plot owned by such authority or body or places at their disposal by the government. Same. For the purpose of selling all or some of the apartment or as plot. Then अपेक्स स्टेट बॉडी है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है वो अगर डेवलप कर रही है तो दे आर ऑल ट्रीटेड एज अ प्रोमोटर एंड दे हैव टू बी रजिस्टर्ड देन फिफ्थ है एनी अदर पर्सन हु एक्ट हिमसेल्फ एज अ बिल्डर पॉलिटिशियन देन कॉन्ट्रैक्टर डेवलपर स्टेट डेवलपर और बाय एनी अदर नेम और क्लेम टू बी एक्टिंग एज द holder of the power of attorney from the owner of the land on which the building or apartment is constructed or plot is developed for the sale. वैसे ही अगर जॉइंट डेवलपमेंट है कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जिसमें लैंड ओनर बोल रहा है आपको आप बिल्डिंग बनाइए या प्लॉटेड प्रोजेक्ट कीजिए यू विल बी ट्रीटेड एज अ प्रमोटर इसमें एक शाहपुर जी पालम जी का केस है जिसमें दे आर नॉट अ लैंड ओनर बट दे आर द कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंटेड बाय द प्रमोटर और ये प्रोजेक्ट कुछ डिले हो गया था ड्यू टू सम कंस्ट्रक्शन अब्स्ट्रैक्ट
तो शाहपुर जी पालम जी को भी पार्टी बनाया गया है और दे आर ट्रीटेड एज अ प्रोमोटर, कंस्ट्रक्शन प्रोमोटर or developer promoter, and they are fined by the authority. Such other person who construct any building or apartment for sale to the general public. Then एक explanation दिया है उन्होंने, for the purpose of this clause where the person who construct or convert a building into an apartment or develop a plot for sale and person who sell apartment or plots are different person. Both of them shall be deemed to be promoter and shall be jointly liable as a such for both of them shall be deemed to be a promoter and shall be jointly liable as a such for the function and responsibility specified under the act or the rule and regulation made thereunder. ये ऐसी है जैसे मैंने शाहपुर जी पैलम जी का जो केस बताया वो इसमें कवर्ड होता है। अगर आप जॉइंटली या सेवरली लैंड ओनर और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर डेवलपर अगर साथ में आते हैं और आप अगर कॉज कर रहे हो बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन को तो यू विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक सवाल है जो हाँ नॉर्मली आता है लोगों के इसमें कि इन केस फॉर एग्जांपल माय सोसाइटी इज गोइंग फॉर रीडेवलपमेंट, मैं नॉर्मल एक सोसाइटी है वो एक रीडेवलपमेंट में जाता है, तो तभी क्या वो सोसाइटी भी को प्रमोटर या प्रमोटर बन जाता है या इट इज एंड कंसिडर एज एन अलॉटी? कुणाल सर, इफ यू कैन फर्स्ट पुट योर इनसाइट्स एंड देन ललित सर कैन आल्सो पुट. Recently, in one of the Bombay High Court judgment, they have announced that the landowner society tenants will not be treated as allotee. They have announced such judgment, but it is a thin line judgment. Maybe in years to come, we will get a proper and crystal approach towards the same. The society is treated as landowner because they are having a full rights on the land, but the flat owners are the members of the society. So basically, society will be treated as a landowner in this particular whole scenario as per the RERA definitions. Lali sir, you want to add some inputs into this? Yes, you also believe the same thing, right? Ki society will be considered as a co-promoter, as a landowner, and they will be considered as a co-promoter. Nowadays, redevelopment of the cooperative housing society is in the boom because of from last 30 to 40 years or even from 20 25 years old buildings are going to redevelop by the promoters और society के जो member होते हैं they are not aware for the construction activity, so they will approach for the promoter developer, and they will enter into contract like redevelopment contract. Here, in Real Estate Regulation Act, they have specifically mentioned that co-promoter is not covered in this act. Means what? Society is also a promoter. Society is treated as a landowner promoter, and the builder is treated as a developer promoter. Because of this relation, they both are not covered in this act. If their dispute comes in the table, they have to go for the other forums. They cannot come to RERA forum. And interestingly, we will see redevelopment. We will see the definition for the redevelopment project. तो उसमें क्या है कि जो अलॉटीज है पुराने वाले सोसाइटी मेंबर, दे आर आल्सो नॉट कवर्ड इवन दे बाय द एक्स्ट्रा एरिया ऑफ द फ्लैट। जैसे कि मेरा 500 स्क्वायर फुट का है, बिल्डर अगर मुझे 20% एक्स्ट्रा दे रहा है, I am going to get a 600 square foot. That I have paid for 100 square foot, even though I am not covered in this act as a allotee. तो एज अ प्रोमोटर ट्रीट किए जाएंगे और जो पुराने अलॉटीज है दे आर नॉट बीन यूनिट होल्डर, नॉट कॉलिंग एज अ यूनिट अलॉटी इज नॉट गुड. Unit holder are not the allotee in RERA Act. Of course. Yes, one more question. One of the participants have asked, ki, let's assume that I am a real estate developer. There is a possibility that I do not have the whole team of, construction, materials. मेरे पास नहीं रहेगा. So I might be taking some services on a contract basis from, maybe construction property, cement हो गया, वो सब contract basis में हम लोग लेते हैं. क्या I understand your question. हाँ, एग्जैक्टली. तो वो हम लोग जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में लेते हैं,
अभी तक शायद से वेल रजिस्ट्रेशन वी हैव नॉट फाइनलाइज्ड कौन मैं किसके साथ करने वाला हूँ। क्या वो जो कॉन्ट्रैक्ट में मैं जिनके साथ कर रहा हूँ क्या वो लोग भी प्रमोटर बनते हैं या इट इज दे आर नॉट कंसिडर्ड एज प्रमोटर्स जो नहीं भी नहीं, वो प्रमोटर नहीं हो गए। देखिए यहाँ पे लैंड और यूनिट का जो सेलिंग राइट्स है वो किसके पास है, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली वो जो आरसीसी वाला कॉन्ट्रैक्टर है, सैंड वाला कॉन्ट्रैक्टर है, या फिर इवन इन केस ऑफ लॉक एंड की कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, that contractor is also not covered because he is not going to sell. He is just giving a service to the promoter or builder or the person who is holding the land in future after constructing the building. बिल्कुल In case of Shapurji Palamji, they have constructed, they have entered into agreement. वो बहुत बड़ा केस है, यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता। वो अगर करूंगा तो डेढ़ दो एक आध घंटा तो उसमें ही चले जाएगा। बिल्कुल इन शॉर्ट उसमें क्या है कि लैंड ओनर ने बोला कि वी विल टू इंटर इनटू एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड यू विल कंस्ट्रक्ट, आई विल सेल, और यू विल सेल, यू विल कंस्ट्रक्ट एंड गिव मी अ मनी. In that case, Shapurji Palamji is not willing to complete the project due to some scarcity of material and money. In that case, if that contract agreement shows he is a promoter, he is a cost to be constructed, then it will be covered as a promoter. अदरवाइज ये छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टर जो है, जो प्लास्टर कॉन्ट्रैक्टर, प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर कॉन्ट्रैक्टर, इवन केस ऑफ लॉक एंड की कॉन्ट्रैक्टर, वो इसमें नहीं कवर होंगे. इट डिपेंड ऑन कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट. बिल्कुल कुणाल डू यू वांट टू ऐड ऑन दिस कि अभी जैसे मतलब जैसे सर ने बोला आई थिंक सो यू आल्सो एग्री टू दैट कि वो जो सर्विसेज है वो एक आउटसोर्स सर्विसेज है दे आर नॉट एक्चुअली डायरेक्टली सेलिंग द फ्लैट्स नाइदर दे हैव राइट्स ऑन द लैंड नाइदर ऑन द डेवलपमेंट इट इज जस्ट कि वो लोग एक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इफ वी सो एनी इनपुट्स ऑन दैट Yes, rightly said by Lalit sir. There is no such provision where we have to show them as a landowner or a promoter. But if we want to show, like if we are entering into some contracts with bigger vendors or bigger contractors, then maybe in the list of professionals where we have to disclose, there we can put their details so that the project credit credit of the project goes like it gets increased. Like if you are hiring Shapurji Polanji or any other contractor for your own project, and if you want to list the same on your RERA portal, you can do the same so that your credit of the project increases as a whole in front of your customers. Yes, but I think so. I think so. You all have both, given the proper answer. I know the participant who had asked me this. I hope your question is answered. That any contractual services they are not considered as a promoter or a co-promoter. It is just a service which is given, and it has nothing to do with promoter or registration process. Yes, Lalit sir, you can continue. Important thing is the ownership of the project. Ownership of the yes. Then main two conditions are there for registration, which is for 500 square meter of land, not exceeding 500 meter of the land, and second condition is not exceeding 8 inclusive of all phases. अगर 8 यूनिट से ऊपर अगर है और लैंड एरिया 500 स्क्वायर मीटर से अगर ऊपर है तो ही रजिस्ट्रेशन करना है. अभी यहाँ पे बहुत कुछ दिक्कत होती है बिकॉज ऑफ दिस. और अगर आप एक्ट अगर देखें तो दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन फुलफिल अगर हो गई तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है. और यहाँ पे क्या हुआ है कि महाराष्ट्र स्टेट ने यहाँ पे और को एंड पढ़ने को बोला है और बोला है कि दोनों कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है. लेकिन इन केस ऑफ गुजरात एंड अदर स्टेट, और इज टू बी रीड एज और मीन्स 500 स्क्वायर मीटर लैंड से ज्यादा है या फिर 8 यूनिट से ज्यादा है तो यू हैव टू गो फॉर द रजिस्ट्रेशन. इसके नीचे अगर कुछ है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है. इसके बाद में इसी सेक्शन में बोला गया है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को अगर लगता है कि ये 500 स्क्वायर मीटर और 8 यूनिट अप्रोप्रिएट नहीं है, उसको थोड़ा नीचे कर सकते हैं. तो दे कैन रिड्यूस बट दे कैन नॉट एक्सीड द लिमिट of 500 square meter of land or more than less than 8 unit. So West Bengal में किया है कि I think 300 square meter of land and 8 unit है. So state government or RERA authority can reduce the 500 square meter or 8 unit, but they cannot extend. Then whether promoter has received completion certificate, ये जब act incorporate हुआ था या फिर come into existence,
उस दिन के लिए जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है 2016 के पहले वाले या फिर बी स्पेसिफिक मई 2017, तो उसके पहले अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है और उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है, देन दे हैव टू गो फॉर रजिस्ट्रेशन. अगर उनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया है दिस कमेंस बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, देन दे डिड नॉट गो फॉर द रजिस्ट्रेशन. देन रिनोवेशन रिपेयर रीडेवलपमेंट अगर है तो उसमें भी उस प्रोजेक्ट में मार्केटिंग नहीं है, एडवर्टाइजमेंट नहीं है, सेलिंग नहीं है, न्यू अलॉटमेंट नहीं है, तो उनको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है. ये रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है सोसाइटी के, उनके लिए इंपॉर्टेंट है. जितने ही मेंबर है उतने ही मेंबर अगर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, कोई भी एडिशनल यूनिट नहीं बन रहा है, तो उस केस में रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है. लेकिन अगर एक भी यूनिट एडिशनल बन रहा है और दे आर गोइंग टू सेल, तो दे हैव टू रजिस्टर फॉर द रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी. देन एक्सप्लेनेशन दिया गया है फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन वेयर द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट इज टू बी डेवलप बाय इन फेज एवरी. तो इसमें एक ही कहा गया है कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट है या फिर मल्टीपल अपार्टमेंट है, मल्टीपल फेजेस है, तो उसके लिए वो पार्ट पार्ट भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है और फेज वाइज भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है और प्रोजेक्ट एज अ होल भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है. इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि पार्ट और फेज में करने से क्या होता है कि पूरा प्रोजेक्ट अगर समझो 20 बिल्डिंग का है, 10 बिल्डिंग का है, तो फेज वाइज आप रजिस्ट्रेशन कर लो एक एक बिल्डिंग या दो दो बिल्डिंग का. सो यू कैन कंप्लीट दैट फेज एंड यू कैन टेक पार्ट कंप्लीशन एंड यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन अदर फेजेस. तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आई थिंक सो सर, लाइक यू, आप ये कहना चाहते हो कि मतलब अगर 20 बिल्डिंग है, आप 20 का साथ में रजिस्ट्रेशन लेके मतलब नहीं बनता, क्योंकि आप 20 बिल्डिंग साथ में तो कभी विद इन 3-4 साल में तो कर ही नहीं पाओगे. देन हम्म. आपका 20th बिल्डिंग में जो आपने सेल किया उसके कंप्लेंट्स आना चालू हो जाएंगे, उसका प्रेशर आना चालू हो जाएगा, वापस आपको एक्सटेंशन लेना पड़ेगा, अननेसेसरी डिले होएगा. इट इज बेटर कि आप एक दो बिल्डिंग करके रजिस्ट्रेशन ले लो. हाँ, अभी सेक्शन 3 में क्या है कि प्रमोटर जो है, वो प्रमोटर कौन है और प्रमोटर को रजिस्ट्रेशन करना है या नहीं करना है, उसके बारे में हमने देखा. उसमें इंपॉर्टेंट यही था कि 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा लैंड होनी चाहिए और 8 यूनिट से ज्यादा यूनिट होने चाहिए वो प्रोजेक्ट में. अभी ये कंडीशन फुलफिल हो गई तो यू हैव टू गो फॉर रजिस्ट्रेशन. तो रजिस्ट्रेशन कौन से सेक्शन में होता है, तो वो सेक्शन 4 में होता है. तो सेक्शन 4 में फिर बताया गया है कि कौन से डॉक्यूमेंटेशन और क्या क्या लगता है, क्या इंफॉर्मेशन लगती है. तो ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट आई विल जस्ट ब्रीफ यू अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन. ये तो इम्पोर्टेंट यही है कि जो प्रमोटर है हु इज मे बी अ प्रोप्राइटरी फर्म, एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, एचयूएफ है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है या फिर म्हाडा वगैरह गवर्नमेंट अथॉरिटी है, तो उनकी पूरी डिटेल लगेंगी. उनके डायरेक्टर पार्टनर उनके डिटेल लगेंगे, उनके पैन कार्ड, आधार कार्ड, उनके एड्रेस प्रूफ, केवाईसी लगेगा. फिर उसके बाद में जो भी प्रोजेक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं उसकी कमेंसमेंट सर्टिफिकेट लगेगी, बिल्डिंग अप्रूवल प्लान लगेगा, उसकी उसका 7/12 या फिर जो कुछ भी लैंड रिकॉर्ड है वो लगेंगे. आपको एडवोकेट से टाइटल रिपोर्ट लेना है, या आप पढ़ लीजिए एक बार, इसमें सब कुछ है. आई विल जस्ट गिविंग योर ब्रीफ डिटेल. देन वो एरिया कौन सा है, वो एरिया में कोऑर्डिनेट वगैरह डालने हैं, लॉन्गिट्यूड लॉन्गिट्यूड. फिर लोकल अथॉरिटी के कुछ परमिशंस है, जैसे फायर हो गया, लिफ्ट हो गया, देन सैनिटेशन का है, तो वो सब कुछ आपको लगेगा. देन अलॉटमेंट लेटर का भी आपको फॉर्मेट देना है, एग्रीमेंट फॉर सेल जो है उसका ड्राफ्ट देना है, कन्वेंस डीड कैसे बनाने वाले हैं आप, उसका फॉर्मेट देना पड़ेगा. देन उसमें नंबर ऑफ अपार्टमेंट कितने हैं, उसके टाइप कौन से है, उसका कारपेट एरिया कितना है, वो सब डिटेल देने पड़ेंगे. देन गराज कितने हैं, देन पार्किंग कितनी है, कोई रियल एस्टेट एजेंट है या नहीं है, वो सब कुछ आपको इसके देने पड़ेंगे. स्ट्रक्चरल इंजीनियर, आर्किटेक्ट कौन है, इंजीनियर कौन है. उसके बाद में टाइटल सर्टिफिकेट तो बोला, लैंड में अगर कोई इनकम्बरेंस है तो वो देना है, नहीं है तो उसका बताना है. अगर है इनकम्बरेंस तो वो कौन से स्टेज पे चल रहा है, कोई कोर्ट में या कुछ डिग्री है तो वो भी आपको बतानी है. यस, आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन कि देखो सी, जो सेक्शन 4 है वो तो हमको सब बताता है कि क्या क्या डिटेल्स हमको अपलोड करते वक्त डालना है, बराबर. ओके. आप बिकॉज यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग इन महाराष्ट्र, आप क्या मतलब एक सजेशन देना चाहोगे कि जब हम लोग ये डिटेल्स कर रहे हैं, जब डिटेल्स भर रहे हैं,
कितना इंपॉर्टेंट है कि हर एक डिटेल प्रॉपर होना चाहिए, कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब एक्ट तो हमने पढ़ लिया, एक्ट में तो हमने सब कर लिया, कितना कभी भी क्या होता है हम मिस आउट कर देते हैं कुछ चीजें। तो इसमें आपका क्या व्यूज है, मतलब व्हाट डू यू सजेस्ट ऑन दिस? देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि ईच एंड एवरी, इवन सिंगल कॉमा और डॉट विल मेक हरेसमेंट। सो आई विल टेल यू, आप 2 बार नहीं 3 बार देखना है जो भी कुछ इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो ना वेबसाइट पे, हर एक टैब में या फिर, वो आपको 2 बार कंपलसरी चेक करने, क्योंकि क्या है कि अगर एक बार गलती हो गई ना तो बहुत महंगी गिरती है वो। फिर चेंज ऑफ एप्लीकेशन डालो, फिर वो पूछेंगे क्यों होगा क्या होगा, उसके लिए डिक्लेरेशन डालो। तो इसके लिए मैं बोलूंगा कि ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट यू शुड एनालाइज। जैसे बिल्डर ने दे दिया, प्रमोटर ने दे दिया, आर्किटेक्ट ने फॉर्म दे दिया, इंजीनियर ने फॉर्म दे दिया, बैंक ने बैंक अकाउंट नंबर दे दिया, लेकिन वो कैसे है क्या है, बराबर फॉलो हुआ है नहीं हुआ है, वो आपको देखना ही पड़ेगा। यू हैव टू स्ट्रिक्टली चेक एंड करेक्ट एरर फ्री डॉक्यूमेंट। बिल्कुल। इट शुड बी एरर फ्री। यस। यस देन आपको एग्जैक्टली। आर्किटेक्ट से सर्टिफिकेट लेना है, इंजीनियर से सर्टिफिकेट लेना है कि काम कितना होने वाला है, कितना लगने वाला है, अब तक कितना काम होने वाला है, आगे कितना होने वाला है। देन सेम सर्टिफिकेट फ्रॉम द चार्टर्ड अकाउंटेंट। और शेड्यूल बैंक में आपको अकाउंट ओपन करने हैं, और उसमें 70% का जो अकाउंट है, 70-30 का रूल है, तो 70% अकाउंट जो है वो रेरा वेबसाइट पे डालना है। कुणाल सर, एक सवाल आपसे मेरे को है। इन द मीन टाइम आई आस्क वन क्वेश्चन, चैट बॉक्स में भी पूछा है, एंड ये जो है क्वेश्चन कि कितना रजिस्ट्रेशन के वक्त हमको चार्ज करना चाहिए, ये एक सवाल हमेशा पूछते हैं। एंड ऑफ कोर्स हम लोग का जो 7th सेशन है इन विच क्लाइंट एंगेजमेंट एंड फीस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, तो तभी तो हम एक्चुअली में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन फीस विच वी शुड चार्ज। कुणाल सर, इफ यू कैन जस्ट गिव एन Yes, yes. इंसाइट कि नॉर्मली इन महाराष्ट्र एटलीस्ट, या कॉम्पिटिटर्स, या जैसे भी हमको क्या देख के हमको करना चाहिए अपना? See, basic understanding should be your standard fees. पहले आप स्टैंडर्ड फीस डिफाइन कर लो कि ये काम के लिए मुझे इतने पैसे मिलेंगे, मुझे चलेगा। फर्स्ट, अगर आपको जम गया, आपका एक लेवल तक आप लेके जाओ, जैसे कि 10 क्लाइंट्स और 10 प्रोजेक्ट्स। वंस यू आर इनटू 10 प्रोजेक्ट्स, देन अगेन यू स्टार्ट इंक्रीजिंग योर फीस। फीस इज नेवर अ स्टैंडर्ड बेंचमार्क। आपको धीमे धीमे ऐसी एज यू लर्न एंड यू कीप ऑन प्रोग्रेसिंग, आपको मार्केट में जो फीस रहेगी उसके हिसाब से यू विल हैव टू कीप ऑन इंक्रीजिंग योर फीस slowly and gradually. But you will also have to check that you are not charging more money in a place where it is a rural area project, or maybe which is very connected to a rural area. So basically, you will have to check what all conditions are there, and then you will have to evaluate, and then you have to charge. In starting, like if you want to penetrate the market, अगर आप अभी नए हो और आपको कुछ काम लेना है, तो you can take some fees, but आप एक स्टैंडर्ड रखो कि एक स्टैंडर्ड है, ये फीस से नीचे मुझे भी नहीं जमेगा, वैसे करके। रेस्ट ऑल इट इज लाइक वी आर न्यू, सो व्हाट इज द रेंज ऑफ फीस? ओके, सी बेसिकली a normal form 3 is approximately 15,000, 15,000, 10,000. That is the range for giving the certificates. And you can, depends upon the consulting which you are giving. For form 3, first form 3 we charge little more, so that it's because we are planning in that particular phase, yeah, how this project profitability and all other factors are checked. So in form 3 we can charge more, and in QPRs we can charge a little lesser. And for rest form 5, it's an annual audit, you can charge like 25, depending upon the case to case projects. Exactly. You have to take a call. Exactly. And for the registration, I told you, see, basic, it is very documented documentation work, and you have to upload those documents, and you have to clarify the department. So there is no standard fees, or you can say what is the range of fees we can start from. So there is no such standard. I will like to add on this Yeah. कि what I have also witnessed is कि sometimes all the work is already done by the client. If, Yes. for example, sub documents and everything, they have their own legal team. Everything is done by them. All the documents are ready with them. It is just they do not, they want some professional to upload it and not from their end. If everything is done from their end, you just have to go through it and upload it. At that point of time, we can charge a little bit less.
if you want maybe 30,000, 40,000, 50,000 based on that amount. But if all the work, like all of the paperwork, whether everything is proper or not, whether legal title is clear or not, document uploadation is done on time or not, all these so many complicated matter is there. And there is supposingly in one layout there are different plots available. There's phase wise development. There's already one development which is happening already in that layout. There's already registration which is done by some other developer. So in that kind of a situation queries आ सकता है, और वो क्वेरीज को आपको डील करना है। तो ऐसे सिचुएशन में जब इतना कॉमन मैटर, ऐसा भी हो सकता है कि एक ही बिल्डिंग में देर आर 100 यूनिट्स विच यू हैव टू फिल इन। 100 के बदले देर में भी, जैसे ललित सर ने बोला, 20 बिल्डिंग्स का आपको रजिस्ट्रेशन साथ में करना है एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर पे। सी इफ द क्लाइंट वांट्स इट, यू हैव टू डू इट, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो एट दैट पॉइंट, बिकॉज द अमाउंट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स विच आर पुटिंग इट सो मच, आप ज्यादा चार्ज कर सकते हो। देर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट। इट्स अ प्रोफेशनल फीस इन द एंड। तो आप चाहिए तो 1-2 लाख 3 लाख तक भी चार्ज कर सकते हो, अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट है एंड द बिल्डर इज ऑल्सो in need of your services and you are able to deliver to that services. That is most important also, I feel, कि अगर Yes. आपको एक्ट ही नहीं पता है, आपको सेक्शंस ही नहीं पता है, तो आप 3 लाख रुपए भी चार्ज करोगे कोई आपके पास आएगा ही नहीं। और अगर आप 10,000 भी फिर चार्ज करोगे फिर भी कोई नहीं आएगा, कि आपको पता है कि इतना सस्ते में तो कोई करता नहीं है। सो इट्स अ वेरी मिक्स एंड मैच काइंड ऑफ सिनेरियो। यू हैव टू प्रूव इट टू द क्लाइंट कि यू आर वर्थ दैट मच अमाउंट। It can be a simple registration, you can charge 1 lakh rupees. It can be a complicated registration, you can charge a little bit Yes, less. सॉरी टू इंटरप्ट। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि आपको रियल एस्टेट एज अ 360 देखना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। नाउअडेज बिल्डर विल नॉट गो टू अकाउंटेंट एंड जीएसटी एंड देन इनकम टैक्स कंसल्टेंट एंड रेरा एक्सपर्ट। ऐसे नहीं करेंगे आजकल। बहुत सारे बड़े बिल्डर है, उनके वो तो इन हाउस होते हैं, लेकिन जो छोटे मोटे बिल्डर है, 2 5 10 करोड़ के प्रोजेक्ट करते हैं, वो दे विल नॉट हैव एनी बिग सेटअप। then you have to tap them and give a holistic service. Then they will Yes, definitely pay you fee. yes, Kunal sir, you want to add something? या बेसिकली ललित सर, जो गुजरात में प्रैक्टिसिंग एरिया है, तो वहाँ पे यूजुअली ऐसा होता है कि जो मतलब दे आर हैविंग मल्टी पार्टनर्स, मतलब इन अ पर्टिकुलर फॉर्म, and they are not dwelling into all the areas. So like if one partner is doing income tax, he will not be much concentrating on the GST part. This is the way whole majorly in Gujarat works, the CA firms. So basically to get into RERA, it is common for all. Like income tax person can also practice in RERA, a GST person can also practice in RERA. नहीं, छोटी मोटी फर्म तो करती है वो। हाँ हाँ, अगर छोटी आपको मोटी। बिग क्लाइंटल बनाना है या फिर आपका नाम ही आपको ब्रांड बनाना है, तो यू हैव टू एक्सपर्ट इन योर एरिया। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी क्वेश्चन पूछे तो उनको समझ, उनका क्वेश्चन का आंसर मिलना चाहिए। देन दे विल वैल्यू योर नॉलेज। बिल्कुल। I think so. Yes, this topic which has been asked in the chat box, that in-depth 1 hour session is what we have in the 7th session, Yeah. wherein client For that, engagement. Gujarat RERA manual, act, and then fees circular I have uploaded. What type of fees is required by the Gujarat? Thank you so much, sir, for that. Because we have again one little less time, Lalit sir, if rather than not sharing the screen, if you can just give a brief about the section 5, I think so that is the only thing which was pending. Just a brief कि what is section 5, कि within 30 days आपका registration मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आप बस एक थोड़ा ब्रीफ दे पाओगे उसके बारे में? या जैसे कि हमने सेक्शन 5 जो डिस्कस किया है, उसमें एक बार एप्लीकेशन अगर आपने अपलोड कर दिया तो विद इन 30 डेज ऑथोरिटी हैव टू इशू अ सर्टिफिकेट। अगर स्क्रूटिनी में अगर कोई दिक्कत आ रही है, उनको कोई क्यूरी अगर रेज कर रहे हो, तो जब आप उसको क्यूरी को सॉल्व करने के बाद जब सबमिट कर रहे हो, उस सबमिशन के बाद वापस 30 डेज शुरू होते हैं। तो ऐसा मत समझिए कि आपने फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन सबमिट कर दिया तो उसके बाद में 30 डेज नहीं। इट विल स्ट्रेच टू 6 months 1 year till you have solving all the queries raised by the department। वो इम्पोर्टेंट है। और आप वहां पे जाकर भी उनको डिस्कस कर सकते हो कि एक्चुअल में क्या दिक्कत है डॉक्यूमेंट्स में या फिर इंफॉर्मेशन में। और जैसे कि मैंने बताया कि एप्लीकेशन करते वक्त ही इतना अच्छा स्टडी कर लो प्रोजेक्ट के बारे में। अगर कोई क्यूरी और क्वेश्चन अगर वो उठाते हैं
तो वो आपने अच्छे से सॉल्व करना आना चाहिए। अगर आपने स्टडी किया होगा तो ही आपको वो सॉल्व करते आएगा। उसमें कैसे कि अगर ग्रांट कर दिया तो ठीक है, रिजेक्शन अगर किया है तो रिजेक्शन क्यों किया है उसका रीजन भी देना पड़ेगा उनको, और रिजेक्शन के बाद में यू कैन गो फॉर द अपील अपील, रिगार्डिंग यस, रिजेक्शन ऑफ द यस। कुणाल सर, एप्लीकेशन। आई थिंक सो बिफोर वी एंड द सेशन, एक लास्ट एक सवाल आपसे है कि जैसे रजिस्ट्रेशन करते वक्त सर ने तो आई थिंक सो पूरा सेक्शन एकदम डिटेल में कवर कर दिया, बट व्हेन वी आर डूइंग द रजिस्ट्रेशन, कुछ जैसे क्लाइंट से हमारा बार बार इंटरेक्शन करना, हाउ मच इंपॉर्टेंट इज दैट एस्पेक्ट कि हम लोग को जो भी, जैसे सर ने बोला, इन्फॉर्मेशन शुड बी वेरी क्लियर, एंड व्हेन वी अपलोडिंग इट वी शुड बी आल्सो श्योर शॉट नोइंग कि जो हम लोग कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, वो सही होना चाहिए। तो उसमें आपका क्या व्यूज है कि क्लाइंट इंटरेक्शन एंड ऑल, व्हाट इज योर व्यूज ऑन दैट रिगार्ड? Basically, first we will have to make a list, proper list of information what we require while doing RERA registration. Like a checklist kind of a thing. Checklist, you can say. And secondly, then after the list of documents, we will have to communicate with their professionals also, because there are standard formats given by RERA authorities, whether that is being followed or not, because there will be some professionals who won't be much updated, or maybe they will be new to this work. So basically we will have to share those formats to them, like form 1, form 2, form 3, form 1 and 2 specifically, because that is being given by some other professionals. Professional, And yes. yeah, and the legal title report by a lawyer. So these all formats which we have to give them, so that it is easy for them for going through the formats also, and the client will also appreciate your efforts. You have to just send them the legal drafts, all the PDF files which is available on your RERA website, and they will be happy to see this person is having all together all the information on at a go. So it creates more impression, and whenever you are submitting the documents, make sure all the documents are signed by the authorities also, as well as your client, because Exactly. sometimes the layouts and all the approvals are done, but the client's signature are missing, because the signatures are very on the downside of the page. So that is the issue, and we have to make sure कि जैसे all the professionals are registered on Gujarat RERA website. Because in Gujarat RERA, there is a system that we have to submit the documents to the professional person's portal itself. Like if I have to upload my documents on a particular project, then I have to be assigned to that project, and then I have to make my own credentials, and then I have to upload the same. So I cannot elsewhere in other states, maybe in Maharashtra, we have not yet started. So we do not know whether the Kriti will have this type of information. Yes. Okay. Yeah. So basically, all the professionals have to upload from their own portal, not from the developer portal. And other areas of like shares, we have like maybe in other sessions we have key lots of the what all sessions areas where we can practice in specifically in RERA. Of course. So the all the participants will get knowledge of all the other sessions too. Exactly. So yeah, Yeah, because like Kunal sir said, this is the first session and this is the basic course on registration only. Of course, we'll be dwelling into more and more topics in the coming days. This session, this course is there on every Tuesday and Thursday from 5 to 6 p.m. And we'll be having expert faculties. And with this, I think so we have covered the whole section, the whole topic thoroughly, and we have got a good start to the whole course. So before we end the session, I want to give a vote of thanks to CA Lalit Pawar sir. Always joining and helping us, interacting with all the participants and guiding them and educating them in terms of all the registration process. And even CA Kunal sir, taking out time and always helping out all the other professionals in terms of educating and making aware regarding the RERA laws and practice. And just lastly, I just want to say thank you to all the participants also who have joined today's session. It's the first session. Of course, going forward, more and more complex question, more and more complex topics is what we'll be dealing into, and more experts will be also joining in. So if in the meantime, if throughout the week, if you all have any kind of queries, the WhatsApp group which you all have been part of, you all can definitely ask there.
The experts will also be part of that group. So if any kind of queries are there, you can ask there. They will be, willingly and very happily answering all the questions. With this, Lalit sir, Kunal sir, and all the other participants, thank you so much for joining. Thank you all. Thank you, Shreyas. Thank you, Thank Prabhu you all, sir. and thank you, Shreyas, for giving us such a wonderful opportunity. Yes. Thank you. Thank you so much, Thank everyone. Thank you each one of you for joining this course. I do think that this has been useful course to you. If you had not been here, the course would not have been successful. I also thank the faculty of the day and the course coordinator for taking you through. And if you have any things to discuss, certainly I request you to put it in the chat box or in the YouTube remarks columns so that we will be able to answer them. You are also requested to contact our office or message me on my WhatsApp number 9820106766 or 68 or on my email rsprabhu13@gmail.com. Thank you for being here. All the best.